बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ बहुत ही ऐसे शानदार गेस्ट मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, अब पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. पाकिस्तान की मार्केट को समझना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि पाकिस्तान में हर वक्त एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी हम देख रहे हैं. एंड पीपल आर मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान. और फिर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैंने पाकिस्तान के अंदर आके बिजनेस करना है, तो उसको पहले तो लोग सुनने वाले भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं. देन बट स्टिल कमिंग बैक टू द रूट्स एंड कमिंग टूवर्ड्स योर ओन कंट्री और फिर यहाँ पे आके चीज़ों को नए अंदाज से लेकर आगे चलना वाकई बहुत ही एक चैलेंजिंग और एक यूनिक काम है. सो जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, एक बहुत ही शानदार कपल और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ही बेहतरीन ये लोग काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है अमजद अजीज़ मालवी ने, जो कि 35 ईयर्स से पाकिस्तान से बाहर इनका फूड का बिज़नेस है. ऑर्गेनिक फूड में इन्होंने फ्रांस में अपना बिजनेस शुरू किया ऑलमोस्ट 35 ईयर्स बैक, और उसके बाद फिर उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा. बहुत ही शानदार अंदाज से उन्होंने वहाँ पर बिज़नेस अपना रन किया. और आई थिंक कि वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड को इंट्रोड्यूस करने वाली ये चंद वाहिद कंपनीज़ में से इनकी एक कंपनी है. और उसके बाद अब पाकिस्तान में आकर यहाँ पे काम करने जा रहे हैं. क्या क्या काम करेगा? अच्छा, साथ ही साथ फिलैंथ्रोपी का बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ पे. और इंटरेस्टिंगली जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है. सो इन तमाम तर हवालों से इनसे आज बात करेंगे. सो वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए, बिकॉज मेरे लिए बड़ी यूनिक बात है. आई थिंक हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उन सबके लिए बड़ी यूनिक बात होगी कि पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं. ब्रेन ड्रेन हम कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा हमें इस साल नज़र आ रहा है, एंड देन यू आर कमिंग हियर इन पाकिस्तान. सो डू यू फील कि ये सबसे एडवेंचरस काम करने जा रहे हैं आप ज़िंदगी का? हाँ जी, मैंने जो भी काम किए हैं वो मुख्तलिफ ही किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है. हाँ. और हमें वापस आना चाहिए. यही बहुत अच्छी आपने बात की. और इनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है, एंड शी इज़ बेसिकली अ मोरक्कन हु इज़ इन पाकिस्तान. और साथ ही साथ पाकिस्तान में वो भी इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, बिजनेस में आना चाह रही हैं. शी इज़ एन IT एक्सपर्ट. ट्रैवलिंग का उनको बहुत ज़्यादा शौक है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान और मोरक्को के बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाह रही हैं. सो लेट्स वेलकम सारा. अस्सलाम वालेकुम सारा. वालेकुम सलाम. How are you? I'm good. How are you Thank you. feeling? Happy to have you. I am really happy to have you in the show. And how do you feel like coming here in Pakistan and spending your time here? Actually, it's my second time. As I told you earlier, it was I've never projected myself the first time I came here because it was a new place to me. Even I've been to Southeast Asia many times, but yeah, I'm enjoying the adventure. There is a lot of new things happening in Pakistan, and it excites me. It's part of my personality. It's exciting. And we'll be asking your travel experiences, especially in South Asia, where you have done the solo trips. Right, exactly. Yeah, a backpack trip. Backpack trip. We'll be asking to you about all these adventures, but coming towards you, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे होते हैं, पाकिस्तान में आना और यहाँ पे इन्वेस्ट करना. तो सबसे पहले मुझे ये अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आपने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया फ्रांस में, पाकिस्तान से बाहर गए वहाँ पे, और फिर ऑर्गेनिक फूड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपने उनकी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया. सो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. ये जी जर्नी मेरी जैसे कि आपने बताया 35-40 साल पहले शुरू हुई. तो वहाँ जाके बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि आप ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ आप एक कल्चर अलग है, ज़ुबान अलग है, हर चीज़ अलग है. और फिर ऐसे हालात में आप जाते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है. अच्छा. आपने ज़ीरो से शुरू करना है. तो बरकत अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी हिम्मत दी, उसका हम शुक्रगुजार हूँ. और आस्ता आस्ता जो है वो मेहनत करके मैंने उसका अल्लाह ताला ने मुझे अजर दिया, फल दिया. एक बहुत अच्छा बिज़नेस बना. और आज जो है वो मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापस पाकिस्तान में आऊँ. बल्कि दिल नहीं कर रहा, दिल मान चुका है. मैं फैसला कर चुका हूँ. फैसला कर लिया है कि मैंने आके अपने मुल्क में सेट होना है और खिदमत करनी है. अच्छा, आपने वैसे वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस स्टार्ट किया. सो वहाँ पे कैसी मार्केट थी? आर दे रेडी टू एक्सेप्ट एनी फॉरेनर who is like coming there? And 35 साल पहले the things were different. अब तो सोशल मीडिया का दौर है. एवरीथिंग you're doing है, हर तरह की मार्केटिंग आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं. And then it's easy for the entrepreneurs to start their business. But as I was telling earlier कि entrepreneurship का एक concept अब जो है different है, because you have this tool
जो हमारे हाथों में है बट पहले नहीं था. सो कैसे ये स्टार्ट हुआ और फिर कैसे एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप हुई वहाँ पर? देखिए जी, आज से 35 साल पहले ऑर्गेनिक फूड का कोई रुझान नहीं था उधर भी. हाँ, हैं? हाँ, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था. और यही हुआ कि जब मैंने यानी छोटी छोटी जॉब करते मैं फूड इंडस्ट्री में पहुंचा, तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ तो जो चीज़ मिल रही है उसमें काफ़ी केमिकल्स हैं. हाँ, जबकि मैं एक पाकिस्तान के बारानी इलाके से गया था जहाँ पे कोई केमिकल्स नहीं डाले जाते. सब कुछ जो है वो उस टाइम की बात नेचुरल था. अब तो पाकिस्तान में भी नहीं हाँ, मिलेगा. नेचुरल था. तो मुझे बड़ा शॉक हुआ. तो उस टाइम मुझे ख्याल आया कि हमें अपनी नेचुरल, जिसको अपनी ज़बान में देसी चीज़ें कहती हैं, उसको डेवलप करना चाहिए. तो ये आइडिया आसान नहीं था. बड़े लोगों ने कहा कि बड़ा मुश्किल होगा. वाकई मुश्किल था. लेकिन यह है कि जब मैं कोई फ़ैसला कर लूँ तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है और मैं भी उसमें खूब मेहनत करता हूँ. तो इस तरह आज वो फ्रांस की दूसरी बड़ी कंपनी है. अच्छा. 200-250 स्टोर से ऊपर है फ्रांस में और 300 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर है. तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छा कारोबार है. उसके अलावा और भी काफ़ी बिजनेस शुरू किए हैं साथ में. जी. उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए. उनके बारे में ये है कि हमने एक स्टार्टअप बनाई है जिसके ज़रिए हम जो है ना म्यूचुअलाइज कर रहे हैं ख़रीदारी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के, और साथ ही जो लॉजिस्टिक म्यूचुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, ताकि जो आज बहुत ज़्यादा जो ट्रक चल रहे हैं रोड्स पे, वो जो कि इट्स नॉट सेफ फॉर द एनवायरनमेंट. जी, एनवायरनमेंट भी और रश भी हैं, एक्सीडेंट भी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. तो उनको हम कर रहे हैं. अगर 5 ट्रक चल रहे हैं किसी कंपनी के, तो हमारे सिस्टम से वो 2 कम हो जाएंगे, यानी 3 चलेंगे. अच्छा है जी. तो हमने शुरू कर दिया है फ्रांस में. माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है काम. अच्छा, ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आई विश कि ये भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा सक्सेसफुल हो. बट कमिंग टुवर्ड्स यू सारा, यू वर एन IT इंजीनियर एंड देन यू हैव दिस आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. सो ये हाउ वाज दिस कनेक्शन दैट यू वांटेड टू एक्सप्लोर एंड यू वांटेड टू जस्ट ट्रैवल अराउंड एंड डूइंग बिजनेस समवेयर, maybe in your native country and maybe here in Pakistan? Actually, it's quite a long story that is back to my childhood. My parents were traveling us everywhere in Morocco. We didn't have the means to go outside of Morocco, but still we were like traveling all around. So I know almost every corner of the Moroccan landscape and cities. And I think it's beautiful. So we really want to know about the culture and the beautiful landscapes of Morocco as well. Exactly. It's so different. It's a small country compared to Pakistan. We are 37 million. It's like Karachi plus. Right. So comparing to Pakistan, it's like very small. We have a range of different landscape. We have the mountains and the Mediterranean in the north. We have the ocean, the Atlantic Ocean on the west side. We have the desert in the south, and we have plains. We have everything. Actually, it's a small country, yet it has everything. It has everything. It's like a mini Pakistan as well, no? Because Pakistan has also the landscapes, the mountains. It's huge. Yes, it's huge. But yeah, it's huge. Yeah. So this is it. So my sense of adventure, I mean, like I grew with that sense of adventure from my parents, and once I have a little bit of means, I will say, and a little bit of money, I would just go and explore. First, I moved to France for my last year of engineering school, and then I worked a little bit to make some money, and then I traveled on a solo backpack trip for 6 months. I take one way from Paris to Kuala Lumpur. My parents were going crazy, but I tell them that I'm not asking for permission. I'm just informing that I'm leaving. That's an interesting, I think. So I went on a 6 months Southeast Asian trip. So I've been to almost 10 countries, traveling around. Because I think that, and it's something that I can tell the young people, like when you explore other cultures and the world, it opens up your perspective. Yes, and you grow 10x
than staying in a comfortable zone. And still, you can just like explore even in your country, because I think people in Lahore, maybe most of people have never been in GB or have never been in other part of Pakistan, which can be like even another planet. I think nobody from Lahore has ever moved to Balochistan to just to look at the beaches and all the beautiful places there. So yeah, you're right. To see what's there. So I think it's very important to go out from what you are used to experience every day, because it opens the perspective, it refreshes the mind, and you can be more creative and it humbles you also, because everyone thinks that he knows it all and he knows the best. But when you see other culture or other people or other way of doing things, it makes you a better human, I think. Yeah, definitely. It is. Definitely. And then, I mean, if you talk about the landscapes of Morocco and the whole buildings and beautiful landscapes, everything, and if we compare it with Pakistan, we can see there is a little connection between the two countries. So how can we explore this connection more and more, and how can we improve the tourism between the two countries? Actually, it's incredible. I actually didn't know Pakistan, to be honest, at first. When I was 18, 19, I thought it was same thing. India, Pakistan, Bangladesh. Yeah. For me, all these places are of the world are the same. All right. But when, to be honest, actually, as living with Amjad for like I know him for almost 10 years, and we've been together for 7 years plus. I've discovered that there is many touch points between our cultures. Yes. We are much more similar than different. Right. Because we're still Muslim countries. We are having kind of the same culture, even it's different. And there is even some old sayings that you have in Pakistan, and we have the same, but in a different way of saying it. So for me, there is many similarities that I think it's important to explore. And that's going to be part of my projects, because I know Morocco is quite far for Pakistani people. Yes. It's really hard to reach there. I think maybe you need 20 hours flight or whatever, and it's not direct, and it's hard. Yeah. And even Moroccan people, you will never see Moroccan tourists roaming around in Pakistan. It's really hard. But I think that there is a way to bridge the two cultures. So part of my project is like bring Morocco to Pakistan. So, wow. So more Pakistani people will have a hint of my country, and I think they will identify themselves to this culture. So what are the things you're bringing here? Just tell us a little about it. Actually, there is 3 main things that I want to work on them. First is the gastronomy. All right. So the Moroccan cuisine, that is very rich. It's one of the top cuisine in the world. Yes, it is. And I think it's quite close to the Pakistani taste. Yes. I guess there is some efforts to do to go and meet that cuisine, because it's not maybe that spicy for Pakistani people, whatever. Yeah. But I think that there is some recipe that we can explore to bring to the Pakistani people. So the Moroccan cuisine is part of my mission here. My mission. Oh, all right. that's great. And yes, Pakistanis are food lovers, so they would definitely love Lahore. It's crazy. Yes, Lahoris are. So they will definitely love the Moroccan cuisine here in Pakistan. So what's next? The second thing, it's 2 years back I was here in Lahore and I explored the Mughal bath. Okay. In the old city of Lahore. Old city, yes. All right. And it was, at what time we break that tradition of going to the bath? And because for us in Morocco, we go to hammam, which is Moroccan bath, traditional bath. We go every 1 week, every 10 days. It's normal. Right. It's like a public bath, but it's nice. You relax. You do meet your neighbors, whatever. And it's a ritual. It's a social thing also. And I think that maybe we can reconcile the Moroccan hammam with the old Mughal bath and make something really nice. Wow, that would be so great. That is such a unique idea, and I think people would of Lahore, or maybe obviously of the whole Pakistan, they would love this idea.
So we will see. It's a challenge because it's a new thing. It is a new thing, yes. That people. But people like to explore. Like now in Pakistan, people like to explore new things. They wanted to, look into the things which are a little cultural different, and they really enjoy it. I would So say. we have to think a little bit more how to bring it to people. All but I think right, it's all right. create that connection with the history, especially for me. Yes. It's very important. And I think it's something new, but still like you are connecting with your ancestors. Yes. So it's part of the things. And It's a then unique thing, yeah. the third thing, it's about the architecture. Same thing. Wow. We have riyads it's our traditional houses in old cities, in Medinas we call them. Maybe you say Medina in Urdu, I don't know. No, we don't. The word No. exists. It's like city. Medina, Yeah. it's city in Arabic. And Old city. We only know one Or- Medina, or- and that is like we don't actually know the idea that Medina is called a city. We don't Yeah, know that. it's We just city, Medina. link it to the Medina city of Saudi. yeah, but Medina it means city. Huh, It's, all right. It's that simple. Okay. And there is a beautiful architecture with the mosaic and everything. And also can be really, we can have a fusion with the Mughal architecture that I find Yeah. unfortunate that people don't use this Use in it their anymore. houses. Yes, yes, Use this yes. in their houses, and it's just beautiful work. Morocco had made that effort to keep his artisanal and keep going and training people. I mean, like even new generation to make the old knowledge and know-how in architecture. And I think that we need to rebuild this in Pakistan that is- and really focus on it because it's part of the culture, and we don't have to forget our roots. That is so important. And I think this is the right idea because we always talk about this thing that yes, Pakistan has some amazing artisans, but we don't know how to utilize them. So the art is dying, and especially if you talk about the Mughal art, as you're talking about it, how that we can fuse together the Mughal art and the Moroccan art. And unfortunately, yes, it's true that that the art is dying in Pakistan, and we have to. I mean, if you talk about the walled city of Lahore, yes, they are doing a lot of work. They are putting in a lot of effort to just revive those old things. But yes, if we go and try to find those artisans, we are not going to find them. So this is a very unique idea that you're bringing here, and I wish you best of luck, and I believe that yes, you can do it. Inshallah, Inshallah, you can do it. So जनाब, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है जहाँ पे आप हो सकते हैं कि आपको मोरक्कन कुजीन भी पाकिस्तान में मिले, साथ ही साथ मोरक्कन हमाम जिस तरह से हम बाहर देखते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा यूनिक सा वो एक टच है, वो भी हमें यहाँ पे मिलेगा, और साथ ही हमें वहाँ का आर्किटेक्चर भी समहाउ यहाँ पे नजर आएगा. तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात है. और बिजनेस की क्योंकि बात चल पड़ी है, सो आई वुड लाइक टू नो कि पाकिस्तान में अब इस वक्त जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. कोई चीज़ फैक्ट्री है? जी जी बिल्कुल, चीज़ फैक्ट्री है. हुआ यूँ कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि अपने मुल्क में वापस आऊँ और कुछ करूँ. तो इस दौरान चूँकि मेरा फूड इंडस्ट्री से तल्लुक़ रहा है, शुरू से मेरा तजर्बा है, तो मेरी ये खुशकिस्मती समझे कि मैंने एक दफ़ा जिक्र किया कि मैं जो है ना चीज़ की तरफ जाना चाहता हूँ. अच्छा. तो किसी ने मुझे बताया कि लाहौर में एक आदमी है इमरान साले के नाम से, और जो कि चीज़ हैंडमेड चीज़ बना रहे हैं. अच्छा. प्योर हैंडमेड चीज़ बना रहे हैं. तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, और 2-3 मुलाकातों में जो है ना हम एक दूसरे से काफ़ी करीब हो गए. अच्छा. तो उन्हीं के साथ फिर मिलके जो है ना हमने फार्मर चीज़ मेकिंग के नाम से जो है वो काम शुरू किया है, और माशाल्लाह इस टाइम बहुत अच्छा काम जा रहा है. वेरी नाइस. B2B B2C जो है ना हम सप्लाई कर रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट्स में. लोगों को घरों में डिलीवरी कर रहे हैं. अच्छा. और जितने बड़े स्टोर हैं, मैं एडवर्टाइज नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें सब में जो है ना आपको हमारा फार्मर चीज़ मेकिंग के नाम से जो है वो चीज़ मिलेगा. अच्छा, वेरी नाइस. और जिस तरह से अभी हम ये जिक्र कर रहे थे, पहले तो हमने आपकी जर्नी जानी कि जैसे आपने पाकिस्तान से बाहर जाके वहाँ पे एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया और फिर वहाँ पे आपने काम किया, एंड देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करना है. एज ऑलवेज सेइंग कि पाकिस्तान से बाहर लोग अब जा रहे हैं. अब हम सबसे ज़्यादा देखें तो चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, एक आपको ब्रेन नज़र आता है. सो क्या वजह थी कि एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बावजूद आपने सोचा कि नहीं, मुझे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है? सो क्या यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ आप समझते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, और क्या लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. देखें जी, जिस मुल्क की
230 240 ملین آبادی ہو، اس میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. کیا کچھ نہیں ہو سکتا، صحیح بات. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے جیسا کہ میں نے بتایا 40 سال ہو گئے ہیں، میں آتا جاتا رہتا ہوں اور میں نے بڑا فرق محسوس کیا ہے. پاکستان ہمیں باہر جو خبریں ملتی ہیں وہ پازیٹیو نہیں مل رہی، ٹھیک ہے نا، جو سیاسی بحران ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جب میں پاکستان آتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کام رکے نہیں ہیں، ایسے ہی ہے، چل رہے ہیں لوگ، پیسہ کما رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لوگوں میں ریزیلینس ہے، میرا خیال ہے وہ برداشت کیے ہوئے ہیں. تو میں بتاتا ہوں کہ 40 سال مجھے ہو گئے ہیں باہر، اور 40 سال میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو میں نے اپنے ملک کے لیے نہ سوچا ہو. بلکہ ملک کیا، میں جس گاؤں میں پیدا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ اگر میرا گاؤں خدا ہوتا ہے تو میرا گھر جنت میں ہوتا ہے. یعنی میں نے اس کو اتنا یاد کیا ہے، کہتے ہیں نا خدا کو یاد کرو تو جنت ملتی ہے. تو یعنی کوئی صبح ایسی نہیں ہوئی کہ میں نے اٹھتے ہوئے نہ سوچا ہو، کوئی رات ایسی نہیں کہ میں نے سونے سے پہلے نہ سوچا ہو. وہ ظاہر ہے جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے اپنے ملک کی امپورٹنس. بلکہ یہ میں ہی نہیں، یہ سب لوگوں کی ہسٹری ہے. یعنی میں آپ کو جتنے باہر لوگ ہیں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ ہم سب کی یہی کیفیت ہے. ایسے ہی ہے، ہم پاکستان میں رہ کے شاید تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں نا کہ ہم اپنے ملک کی اتنی قدر نہیں کر رہے، جو کہ پاکستان سے باہر جو رہ رہے ہیں ان کو پھر قدر ہوتی ہے. بالکل. لیکن آج میں جو پیغام دینا چاہوں گا یہ ان تمام میرے بہنوں بھائیوں اور دوستوں کو جو بیرون ملک میں ہیں، سب کا دل کر رہا ہے کہ کچھ جا کے اپنے ملک میں کریں. تو میں ان سب کو انوائٹ کروں گا، کہوں گا کہ یہ وقت آ گیا ہے، پلیز آپ آئیں، ہم سب مل کے معاشرے کو چینج کریں گے. ہم دوسروں پر امید نہ رکھیں، ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اور بہت پوٹینشیل ہے نا، نہ صرف ایک طرف ہمارے ہاں بزنس کا پوٹینشیل ہے، جیسا کہ آپ نے کہا اتنی بڑی آبادی ہے، وہیں اور دیگر پوٹینشیلز بھی ہیں. جیسے ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، سو اوبویسلی ریسٹورینٹس کی ابھی جس طرح سے بات ہوئی کہ ریسٹورینٹس بھی یہاں پہ بنائے جا سکتے ہیں، ٹورزم کو لے کر آیا جا سکتا ہے. تو ہاؤ کین وی پروموٹ ٹورزم ایز ویل سو دیٹ پاکستان وڈ گرو، اور چاہے فارنرز ہی پاکستان میں آئیں کچھ عرصے کے لیے آئیں، کیا ایسے بیسک انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ تھوڑی اکانومی ہماری بہتر ہو؟ دیکھیں جی، سب سے جو پہلی چیز آپ نے بڑی اچھی کہی کہ ٹورزم جو ہے نا اس کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے، چونکہ ہمیں اس چیز کی انتہا ضرورت ہے. جیسے سارا بتا رہی تھی پہلے، موروکو کی جو سب سے پہلی آمدن ہے وہ ٹورزم ہے. بلکہ میں فرانس جس ملک میں رہ رہا ہوں، بہت بڑا انڈسٹریل ملک ہے، سب کچھ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کی سب سے پہلی آمدن ہے وہ ٹورزم ہے. 60 ملین ٹورسٹ ہر سال آتے ہیں وہاں پہ، تو جس کی وجہ سے ہزاروں کروڑوں جو وہاں پہ روزگار کھل رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی اس کی بہت زیادہ چانسز ہیں. ہم سب کو اس کے لیے مل کے کام کرنا ہوگا. اور آئیڈیاز بہت ہیں، جو باہر لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں، صرف ڈرتے ہیں جی پاکستان میں جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ خبروں میں سن رہے ہیں، ادھر آئیں، سب حالات نارمل ہیں، زندگی چل رہی ہے جس طرح باہر چل رہی ہے. اور میرے خیال ہے کہ وہی بات ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ، بیکاز پیپل وانٹیڈ ٹو ایکسپلور. اب اپرچونیٹیز ہمارے پاس بھی نہیں ہے، سو ہمیں نہیں پتا کہ کیسے جا کے ایکسپلور کرنا ہے، بٹ یس پیپل آر ولنگ ٹو ایکسپلور نیو تھنگز. اگر کوئی پاکستان میں آ کے انویسٹ کرتا ہے، کوئی اچھا ریسٹورینٹ بنتا ہے، کوئی اچھی چیزیں بنتی ہیں، سو پیپل آر ولنگ ٹو جسٹ گو اینڈ پے اینڈ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، اس انتظار میں نہ رہیں کہ جی حالات اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے تو جا کے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں. نہیں، ہم نہیں کرنے ہیں، مل کے کرنے ہیں. آج دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ چلتی گاڑی پہ تو ہر کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے کہ گاڑی چل پڑے، آج وقت ہے آ کے انویسٹ کریں اپنے ملک میں. اور اس کے جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ جو حالات جا رہے ہیں دنیا میں اس ٹائم، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ہاں جی، تو ہم جتنے بھی مسلم لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، فرسٹریشن ہو رہی ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کہ کتنا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو لوگ جو یورپین یا امریکن جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کہاں گئے ان کے ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے. اس ٹائم احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک جنگ ہے دو کلچر کے درمیان، دو مذہبوں کے درمیان. محنت کی ہے باہر جا کے ان کو اتنا اکانومی ان کی میں اتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. سو وائی ناٹ ان پاکستان یا وائی ناٹ ان دیئر اون کنٹریز رائٹ ناؤ؟ آئی مین دس از اے رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ. دیکھیں جی، اس کے اگر آپ
ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے یہ فرسٹریشن آپ کو ہو رہی ہے کہ کیوں حالات نہیں بدل رہے, تو وہ کبھی نہیں بدلیں گے. اس کے لیے آپ کو اپنے ملک میں آنا ہوگا. یہ ایک جہاد ہے. جہاد ضروری نہیں کہ آپ نے کلاشیکوف سے ہی کرنی ہے, کہ ادھر روزگار کھولیں, اپنے ملک کو, نیشن کو مضبوط کریں. ڈیفیکلٹیز آئیں گی لیکن ان ڈیفیکلٹیز کو ہینڈل کرنا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کی بات کاٹتا ہوں 2 منٹ. ہمیں باہر جا کے کوئی آسانی نہیں ملی ہے, کسی نے ریڈ کارپٹ نہیں ڈالی, بڑی مشکلات ملی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کامیاب ہوئے. تو ادھر تو اپنا ملک ہے, ہم زبان ہے, ہمارا کلچر ہے, ہم ٹھیک ہے, ہماری تو بہت زیادہ چانس ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ امجد صاحب, آپ یہاں پر آئے, بہت اچھی باتیں کی. آئی تھنک ابھی تو ہمارا باتیں کرنا ہم نے شروع کیا تھا, لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. آئی تھنک کہ ابھی دوبارہ ایک سیشن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس میں ہم ٹورزم پہ خاص طور پہ بات کریں گے, خاص طور پہ ہم بات کریں گے ایڈونچر اسپورٹس کے اوپر, کیسے ہم وہ چیزیں پاکستان میں لا سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. اور باقی میں آپ نے نا جس طرح سے لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں, اور یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ آپ کو دیکھ کر, آپ کے ایکسپیرینس سے لوگ سیکھ کر پاکستان میں آئے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. Sara, thank you so much, and I really appreciate you coming here, and I really enjoy your company, and I believe that yes, you can come and you can do wonders in Pakistan. So thank you so much for coming on the show, and really appreciate. Thank you for inviting us. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو میرے ساتھ یہاں پر امجد صاحب اور سارا موجود تھے, جو کہ پاکستان میں آ کے بزنس کرنے لگے ہیں, پاکستان میں کام بھی کر رہے ہیں. باہر سے پاکستان میں اوبیسلی ایک پوٹینشیل دیکھا ہے انہوں نے, اینڈ دے آر ولنگ ٹو ورک. سو وہی بات ہے کہ پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے. ہم خود پاکستان میں رہ کے پاکستان سے باہر جانے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے انویسٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کی اکانومی گرو کریں. خاص طور پہ پاکستان میں بہت زیادہ اسکوپ ہے ٹورزم کا. ڈسکور پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کریں. سو لیٹس ہوپ کہ یہاں پہ لوگ ایسی انڈسٹری میں آئیں جو کہ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی بہت آگے جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بھی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سو اسٹے ود اس.